पहला सेमीफाइनल क्लिफ्टन गाजी वर्सेस गुलशन गौहर। News from the center that the captain of Gulshan Gohars won the toss and he has opted to bat first. बॉलिंग के निशान पर जल्लाद खान। Here we go। पहली बॉल पहले सेमीफाइनल की और पहली गेंद को उठा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर। एक और ऊंचा शॉट, गॉट इट अवे। फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं, बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अगली गेंद तैमूर मिर्जा, सेमीफाइनल है ये, बाउंड्री से बाहर छक्का और डग आउट में तालियां, तमाशाइयों में तालियां। Caught that away। पहला ओवर क्या पैगाम लेके आ रहा है? क्या 150 रन बनेंगे पहली इनिंग्स में? 120, 130, लेट्स सी 25 आए पहले ओवर से। ओ खूबसूरत शॉट। भले जल्लाद खान हो या साकिब खान हो, बहादुर ने कहा कि मेरा मंशा, मेरी मर्जी यही है कि मैंने छक्के लगाने हैं। तैमूर मिर्जा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और छक्का। अगेन इवन बिगर एंड बेटर, इट्स रेनिंग सिक्सेस। तैमूर मिर्जा एब्सोल्युटली ऑन फायर। खूबसूरत बैटिंग। तैमूर मिर्जा ने पुल किया, मिड विकेट ने जंप किया, लेकिन गेंद उनके हाथ से शायद लग के बाउंड्री से बाहर। एक और छक्का। दूसरे ओवर में 50 रन पूरे। ओ नो, तीसरे बॉलर हैं जिनका इस्तकबाल छक्के से हुआ है। कोई भी हो, हमने छक्के लगाने। Got that away, over to the leg side, ground shape bahar. Oh my God, what a great hit Nadra। फिर मारा straight, oh एक और छक्का। तैमूर मिर्जा is absolutely murdering the bowling। It's high in the air, and taken. So Bahadur lefty gone now. First success for the Gulshan Gohar. It was a very good delivery, a slow one. It's high in the air, and going out of the park. What a maximum that was. Is it his 50? Yes, it's going for the boundary. So this is the 50, just on 11 deliveries. You beauty TM, you beauty Taimoor Mirza. Here we go, is it going out of the park? Yes it is. The brilliant start from Zen lefty, and at the maximum. Full toss delivery, it's going, and goodbye. What a maximum that was. It's a slow delivery, but doesn't work. It's going! You beauty TM. Wow, it's stunning effort. It's high, and going out of this fence for the maximum. Here we go. A fielder underneath there and taken. So this time they have taken this wicket, all important wicket, but too late. Last delivery of the innings. It was a slow delivery, picked up nicely, and another maximum. So Zan lefty ends up this innings with this beautiful shot. 133. I'm telling you, it would be really difficult for Clifton Ghazis.
डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी इनिंग का आगाज कर रहे हैं। राउंड द विकेट जहूर कालिया। लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद, वाइट के 2 रन्स मिले यहां डिफेंडिंग चैंपियन को। इस बार ऑन साइड की जानिब मुजम्मिल कामोकी की जोरदार हिट, 6 रन हासिल किए। इस बार जोरदार पुल, असद शाह ने वहीं से आगाज किया जहां छोड़ के गए थे। असद शाह भी इस इवेंट के बहुत ही कामयाब बैट्समैन। अब तो हाथ खुल गया था तौसीफ भाई, उसके बावजूद असद शाह का जोरदार स्ट्रोक। ऑन साइड की जानिब जोरदार स्ट्रोक असद शाह का। फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और चौका यहां, और इस बार असद शाह का स्ट्रोक। शानदार बैटिंग असद शाह की जानिब से, और इस बार मुजम्मिल कामोकी का अच्छा स्ट्रोक। और वाकई में ये तो चेक करना होगा कि पैर ऐसा लग रहा है कि रोप के साथ जाके टकराया है। नॉट आउट, नॉट आउट का डिसीजन, और 6 रन मिले यहां पर। इस बार मुजम्मिल कामोकी के इस स्ट्रोक पर आउट। अगली ही गेंद पर मुजम्मिल कामोकी आउट हो गए। इस तरीके से ये पहला नुकसान डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी को उठाना पड़ा। this one is in the air, wicket keeper coming under, going to take it, and he has taken it quite easily. Another wicket goes down, another wicket falls. Is the newcomer Asad still out there, and he has gone downtown. This has been smashed, and smashed way back. That's a terrific shot. And it goes again. It is going over mid-wicket. Another 6. There you go. Tremendous batting. Zahir comes in. And he got it, but fielder is there. And who plucked that catch quite beautifully. Tahiri is out finally, but he did his job. He got 12. Asad Shah has hit that. Long, hard, handsome. Over the boundary she goes. 6. He's a dangerous customer, no doubt about that. Down the pitch he comes. And look at that. It has gone for journey. Miles. What a hit. Gigantic one. Farooq. Pulled that away. And pulled that away for half a dozen. Another 6th. Oh, and got a 4. Going to be 4 runs. It wasn't played with confidence. It wasn't a proper shot. But nevertheless, runs do matter. This one is played away. Fielder trying to stop it, and he stops it. He turns back for the second. It must be a run out. It must be a run out. Nawaz getting run out, but Asad will keep the strike. Suhaq Nawaz is walking back for 6. It's 88 for 4 on the board. Very well bowled, although he's going to get at least single, and overthrown, allowing the second run to be taken. Oh, that's a poor throwing. Couple of runs on the last ball, so it's 92 for 4 after 6 overs, so they have conceded the lead of 41 runs. But I think that wasn't a bad effort at the end, because they did try their level best to get closer. तैमूर मिर्जा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जी हाँ, और इसको खेल दिया फाइन लेग की जानिब। यहाँ पर 4 रन मिलेंगे, और एक दफा फिर इसको खेला और आउट हो गए। यहाँ पर तैमूर मिर्जा की बड़ी विकेट। तैमूर मिर्जा खुद भी मायूस खड़े हैं। ये आप खुशी देख सकते हैं क्लिफ्टन गाजीज के खिलाड़ियों की। तैमूर मिर्जा 4 रन बनाने के बाद आउट, और इस तरह पहली विकेट 4 रन पर गिरी। और इसको सीधे बल्ले से खेले हैं, और 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा।
ये चीज सीखनी है कि आपने अगर बाउंड्री हासिल करनी है सिर्फ अक्रॉस द लाइन मत खेलिए। और इस दफा इसको खेल दिया है फाइन लेग की जानिब और बहुत ही बड़ा छक्का यहां पर सरमद का फाइन लेग के ऊपर से न सिर्फ बाउंड्री से बाहर बल्कि स्टेडियम से भी बाहर फेंक दी इस गेंद को। और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, दो फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कोई गलती इस दफा नहीं की यहां पर। उसामा अली ये कैच लेने में कामयाब हुए और दूसरा कैच लिया है, तैमूर मिर्जा का कैच भी लिया था। साकिब बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए इस दफा क्या बहादुर लेफ्टी भी जाएंगे, देखना होगा। जी हाँ, ये एक और कैच थाम लिया, बहादुर लेफ्टी अब वापस जा रहे हैं। बहादुर लेफ्टी को ये शॉट बहुत महंगा पड़ा और उमर इसको ऊंचा खेले हैं, खतरनाक हो सकता है, जी हाँ, उमर भी आउट हो गए। सो इस तरह बैदर पे विकेट्स गिर रही हैं और गुलशन गौहर की मुश्किलात में इजाफा हो गया। Jallat, bad delivery, but he has missed time. Should be out. Yes, gone. Goodness me, 5 down in 3.1 overs. What a turnaround! And Clifton Ghazi guys are on absolute top. Outside edge, dropped. Tough one. Chance out and out. Gone! Zahir Khalid is gone here. Certainly gone. He can't believe it. And good work, good recovery by the keeper. Nothing is going in the favor of Gulshan Gohars in this innings. Wasim. Bowled him out. Goodness me. Nothing is going in the favor of Gulshan Gohars. And Farman has got a wicket. He deserved it. He has smashed the timber. He went for it. Bacha Khan. Just a single. Fumble here. They are coming back for the second run. And overthrows now. Oh, that is a mistake they have made. No. Turned down by Bacha Khan in the end. They have to stay calm, Clifton Ghazi guys. Cry of a catch it and no mistake whatsoever. They are catching beautifully. So Bacha Khan has to depart now. Almost a nothing shot and comfortably taken, well judged catch. Final ball of the innings. Saram to Abu Bakr. Full toss. That should be cut off. Just single taken. Could be run out. Gone. Certainly gone. 9 down and 6 overs have been completed here. And what a performance. What a turnaround by Clifton Ghazi. Just 30 on the board for the loss of 8 wickets. सो अब देखना यह है कि क्या गुलशन गौहर कम बैक करेगी, अच्छी बॉलिंग करेगी, अच्छी कैचेस लेंगे और मैच में वापस आएंगे। ज़हीर कालिया बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, शॉर्ट रन अप से बॉलिंग करते हैं। अब तमाम तर जिम्मेदारी इनके बॉलर्स पर आयद होती है गुलशन गौहर के। ज़हीर कालिया और अच्छा आगाज हुआ है लेकिन 1 रन यहाँ मिल जाएगा। ऊंचा खेले हैं और ये पहला छक्का होगा। बहुत ही शानदार बैटिंग, जोरदार पुल और गेंद को पहुंचा दिया मोइन खान स्टैंड में। ज़हीर सामना कर रहे हैं मुजम्मिल और मुजम्मिल ने इस गेंद को कोशिश पूरी की थी, वहां फील्डर मौजूद थे लेकिन 6 रन का इजाफा हो चुका है। और मुजम्मिल कामोकी ने इस दफा फिर तबले जंग बजा दिया है। एक और शानदार धुआंधार छक्का और इस दफा इसको पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, प्रॉपर कनेक्शन तो नहीं हुई, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और यहां पर एक और बाउंड्री मिल जाएगी। यहां पर मुजम्मिल कामोकी
इस वक्त बेहतरीन बैटिंग करते हुए 25 रन बना लिए हैं और इस दफा मुजम्मिल ने इसको खेला है शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से एक और बहुत ही शानदार और कड़ाकेदार छक्का। Required run rate is just 9.33 per over. Fourth over is getting underway. And first one is spanked and spanked over covers for half a dozen. What a good shot. He has hit it and hit it long and far enough. It's gone all the way. Look at the distance it has covered. What a big hit. Full toss in the air. Although it's a free hit, doesn't matter whether the fielder takes it or not. And they're coming back for the second. Oh my word. Bodies are down, shoulders are down, and they look apart. Gulshan Gohars. Here he goes, a winning shot. And the victory goes to Clifton Ghazi. They have cemented their spot for the final. That is to be played tomorrow. And what a comeback. One of the most marvelous comebacks we have seen in this competition. They have won by 10 wickets in the end. And massive disappointment for Gulshan Gohar guys. Congratulations to Clifton Ghazi. Commiserations to the Gulshan Gohars. They played tremendously well in their first innings. But in second innings, they looked apart. They were nowhere. And Clifton Ghazi made full toll of that. And at the end, they are one of the finalists.